नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजट से जुड़ी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं और साथ ही चुनौतियों से जुड़ा जो हमारा खास कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। And I'm Vishal Dahiya. As my colleague pointed out, this is all about hopes, expectations from the union budget, and we are taking it sector by sector, trying to go ahead and find out as to what exactly is needed at various places in different sectors. And today we're going to talk about health. बिल्कुल। और हम जानते हैं कि कोविड-19 की चुनौती पिछला साल पूरा इस चुनौती से जूझते हुए बीता। अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं और कोविड-19 के दौरान भारत में जो संक्रमण की दर रही और मृत्यु दर रही, वो दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले काफ़ी कम रही। इसका श्रेय देश के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को तो जाता ही है, साथ ही जाता है देश में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। संक्रमण और मृत्यु के हिसाब से हम भले ही दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन सच ये भी है कि इस महामारी ने जो अर्थव्यवस्था है और सामान्य जनजीवन है, उस पर गहरी चोट पहुंचाई है। ये पिछले कुछ दशकों में शायद ही किसी कारक ने पहुंचाई हो जितनी इस महामारी की वजह से हुई है। लाजमी है और वक्त की जरूरत भी है कि हम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको ज्यादा गंभीरता से लें। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय भी यही है, बजट में क्या प्रावधान किया जाए कि भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए देश तैयार रहे और साथ ही जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है वो हर तबके तक आसानी से पहुंचे। Well, definitely India's handling of the COVID-19 pandemic has been praised globally, and now that we are into the vaccination stage, India already being known as the pharmacy of the world is, leading by example on that front as well. There are several positives and there are several areas where a lot of improvement needs to be done. We will try and look at all those aspects. But before we start our discussion, let's take a look at the actual ground situation. The coronavirus outbreak changed perceptions about healthcare like never before. It brought in the issue of health infrastructure to the center stage in policy planning. As a part of its fight against the COVID pandemic, the central government formulated a three-stage strategy. It also sanctioned Rs 15,000 crore for a special COVID-19 emergency response and health system preparedness package. In terms of the union budget, data for last 10 years shows that public spending on health sector has ranged from 1.2 to 1.6% of the GDP. A look at the last 5 budgets reveal 1.6% of GDP was spent on the healthcare sector in the year 2019-20, 1.5% in 2018-19, 1.4% in 2017-18, 1.4% in 2016-17, and 1.3% in 2015-16. The government's emphasis on the health sector is seen through Ayushman Bharat. The world's largest health insurance scheme provides for treatment up to 5 lakh free of cost. It covers nearly 50 crore people. The scheme has benefited over 1 crore 53 lakh people so far. The government has stated that under Ayushman Bharat scheme, 22,000 health and wellness centers have been made functional. Over 13 crore people have been given e-cards. Apart from this, the other large-scale schemes launched by the government include Pradhan Mantri Surakshit Maitritva Abhiyan or Safe Motherhood Assurance Scheme, the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. The government has also targeted making country free of tuberculosis by the year 2025. The government has called 2020 a year of challenges for the health sector, while 2021 will be the year of health solutions. Working on the pressing need to strengthening health infrastructure, the union budget is expected to pay special attention to find solutions to problem plaguing the health sector. Bureau Report, Rajya Sabha TV. Okay, so there it is, all about challenges and opportunities and expectations, as well as my colleague Preeti was earlier talking about. Let's now start the discussion, Preeti, and let us introduce our guests. First, we have Urvasi Prasad with us, public policy specialist from Niti, Aayog, a well-known name when we talk about health-related policies. Welcome, Urvasi. We also have Dr. Alok Rai, the chairman of FICCI Health Services Committee, and also Medica Group of Hospitals is with us.
और साथ ही हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ अनन्या अवस्थी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हार्वर्ड इंडिया रिसर्च सेंटर मुंबई। इसके अलावा हमारे साथ वरुण झावेरी हैं, ओएसडी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत में उर्वशी प्रसाद आपसे करना चाहूँगी। हमने देखा भी अपने रिपोर्ट में भी, और हम जानते हैं कि जिस तरह से 2017 में बहुत ही एम्बिशियस नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ऐलान हुआ, सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की हम बात करें, इंद्रधनुष मिशन की बात करें, और तमाम ऐसी योजनाएं और स्कीम हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए। अगर हम पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र के लिए सरकार के प्रयासों की दिशा देखें तो वो क्या दिखती है, और कोविड-19 की चुनौतियों के बाद क्या उम्मीदें अब इस बजट में की जा सकती हैं? जी बिल्कुल। तो पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत सारे जो कह सकते हैं रिफॉर्म मेजर्स इस सेक्टर में लाए हैं। सिर्फ बजट के तौर पे नहीं, पैसे तो खैर बढ़ाए गए हैं इस क्षेत्र के लिए, लेकिन जो और रिफॉर्म हैं, चाहे आप मेडिकल एजुकेशन में देखें, आयुष्मान भारत की बात की आपने, उसके अंडर जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं प्राइमरी केयर को बेहतर करने के लिए देश में, तो बहुत से ऐसे मेजर्स हैं जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, 2020 एक बहुत ही बड़ा चुनौती का साल रहा, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। और इसमें हमें कोविड के फॉर्म में एक बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो भारत ने काफी अच्छी तरीके से किया है। लेकिन वो चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। तो 2021 में भी चाहे वो वैक्सीनेशन है, चाहे अभी और भी इससे लड़ना बाकी है, लड़ाई अभी बाकी है कोविड के खिलाफ। लेकिन साथ ही हमें बाकी अपनी सर्विसेज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ हमारे यहाँ जो कि आवश्यक था, लेकिन उसकी वजह से कुछ बाकी सर्विसेज पे असर जरूर पड़ा, चाहे वो महिलाओं या बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे टीबी, आपने बात की कि हमें टीबी को खत्म करना है 2025 तक, चाहे कैंसर है, हार्ट की बीमारियां हैं और इश्यूज हैं। तो इन पे भी हमें अब उतनी ही जोरों से ध्यान देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमने पिछले सालों में प्रोग्रेस किया है वो कोविड की वजह से पीछे हो जाए या मिट जाए। तो ये दोनों चीजों को साथ में लेके हमें 2021 में आगे बढ़ना है। इसीलिए यही उम्मीद होगी कि जो ये बजट होगा इन दोनों चीजों को बैलेंस करने का एक तरीका हमें दिखाएगा। Okay, definitely there has to be sort of a balance out there, clearly, as Urvasi is pointing out. Preeti, let us also bring in Dr. Alok Roy here. Dr. Alok, the COVID-19 pandemic has not only, brought the inadequacies, certain inadequacies in several aspects of our healthcare system to the fore, but it has also brought our best out to the world. In terms of the kind of research work our scientists can do, the way our healthcare workers can put their best foot forward, and the indigenous vaccine is a glorious example of that out there. So in both aspects, how would you look and summarize the COVID-19 pandemic period in terms of reminding us what is that needs to be done, and also telling us that yes, these are the things which we can do better? Thank you. I think this is the best example what happened in pandemic. We may think that the government is independent and private world stakeholders in healthcare are different, but they are not. The very fact that everything belonged to state and we all got together and fought this pandemic, the worst pandemic of our lifetime in last 100 years, and we all contributed shoulder to shoulder and ensured that we defeat it. Today, our outcomes are probably one of the best in the world. And with the vaccine coming in has been the greatest solace. And that it has shown that a lot of us who have lost lives have not just wasted lives. We really supported the country. And going forward, if the same spirit continues, and that if we understand each other as we have understood each other in pandemic, going forward, it's going to be good for the country and for the people of this country. At the end of the day, whether government or private stakeholder, we both serve the people of this country, and we look forward to doing the same together. Okay.
Okay, indeed, that is something which is a positive outlook out there, Preeti, as both our panelists are pointing out in terms of what we have learned from the COVID-19 pandemic. There. बिल्कुल, और ये सच है कि कोविड-19 महामारी ने हमें अपनी ताकत को पहचानने में भी मदद की है। अनन्या, अवस्थी, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ, जिस तरह से अभी भी हमने बात की कि किस तरह से जो हमारी ताकत है वो आगे बनकर आगे आई है, और साथ ही जो समन्वय रहा अलग अलग विभागों के बीच में, वो भी हमने देखा है। क्या लगता है पोटेंशियल की अगर बात करें इस सेक्टर को लेकर, तो भारत में किस तरह का पोटेंशियल है जो अभी इस्तेमाल नहीं हो पाया है, और आगे इस पर हम बजट के जरिए, खासकर अगर एलोकेशन की बात करें या किसी और स्कीम की बात करें, बजट में उस पर ध्यान दिया जा सकता है? आपने एकदम सही कहा। जैसे कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू ज़रूर होते हैं, तो जहां सन 2020 पूरे कोविड संक्रमण की वजह से हम पर ऐसे भारी पड़ा, लेकिन आप ये मानेंगे कि अगर आपसे मैं ये वार्तालाप आज से 2 साल पहले कर रही होती तो बड़ा मुश्किल होता लेजिस्लेचर्स को या फिर कॉमन लोगों को समझाना कि जन स्वास्थ्य में या पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आज वो ज़रूरत क्या है एक एक हिंदुस्तानी को, और हमारे विश्व में जितने एक एक आदमी उसको पता है कि पब्लिक हेल्थ, कोविड-19 कह सकते हैं 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रही है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पे नहीं, मेंटल हेल्थ पे, सोशल वेलबींग पे, वो जॉब लॉसेस हो, वो स्कूल्स बंद होना हो, काफ़ी कुछ रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये आता है कि 2021 के बजट के सामने जो है, हम सब जानते हैं कि पहली बार स्वास्थ्य का एजेंडा सबसे ऊपर आया है। और जहाँ तक पोटेंशियल की बात है, मुझे लगता है कि कोविड-19 एक हम लोग को पब्लिक हेल्थ के बारे में बहुत बड़ा मिथ होता है कि या भ्रम होता है कि स्वास्थ्य का मतलब बड़े बड़े अस्पताल, दिल्ली बॉम्बे के बड़े बड़े अस्पताल, या स्वास्थ्य का मतलब है डॉक्टर्स, डेंटिस्ट। लेकिन जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को मिटिगेट करने के लिए हम लोग भूल जाते हैं उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, उन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को, उन आंगनवाड़ी सेविकाओं को, उन आशा एक्टिविस्ट को। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा पोटेंशियल जो इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम में है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है। इंडिया में जितने, मतलब आप सोचिए 25,000 कितने सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 13 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, 9 लाख आशा वर्कर्स हैं। मुझे लगता है कि अगर बजट टर्शरी फैसिलिटीज़ में ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बजट प्राइमरी हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट करेगा, फोकस करेगा, तो इससे हमारी हेल्थ जो आगे मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी है वो भी कम होगी। जितना हम लोग को एक इकोनॉमिक बजट लगेगा उस बीमारी को एंड में आके ट्रीट करने में, उससे भी बचाव होगा क्योंकि आप प्रिवेंशन की बात करेंगे। और तीसरी बात, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी भी अगर प्राइमरी केयर, प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ प्रमोशन के डायरेक्शन में जाए तो वो भी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकती है। Okay, indeed, those are very, very important points there, Ms. Awasthi, which you brought out. In fact, the workers, the healthcare workers on the ground are the ones who are the real force we have. But then, since you mentioned about the money being spent and the budget part there as well, let me bring in Varun here. Varun Jhaveri, OST at National Health Authority with the Government of India. Varun, if we have to understand the facts and figures here as well, we've gone from 1.3% of the overall GDP to 1.6% right now. If we look at the previous budget, the demand has always been to take it to 2.5%. I know it is not an easy task, but the COVID-19 pandemic seems to have further pushed that demand a little higher as well. So can we expect, in some form or the other, more money being spent on the healthcare sector there when the budget is presented? Yeah, well, Vishal, I think what you said is very right. The last 10 months has been tough, not only for India, but for the entire globe, because of the COVID pandemic. I think the intention and the intent of the government is definitely, to increase the type of spending that we are doing on the health sector. And that is also very much outlined in the National Health Policy 2017. Along with the COVID, I think one very big catalyst that has actually, been also one of the watershed moment in the India's healthcare system has actually been the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Being the world's largest government-sponsored healthcare program, covering more than 50 crore citizens, let's try to see what has really happened. By covering the bottom 40% of the population,
the government is now assuring that you go and take treatment and government will pay for it. So if you look at the type of augmentation of demand that has happened at the lowest level, that is phenomenal. So there used to be a lot of families, there used to be a lot of citizens below poverty line who were not able to access treatment, either because they did not have the type of finances, they lacked the awareness. But now with the Ayushman Bharat, in the last almost 2 years, we have provided treatment more than 1.53 crore citizens. Okay. So look at the type of demand that is increasing. And especially, I think, this is the time when we start focusing a lot on the type of demand which has increased in the tier 2 and tier 3 cities. Because, if you look at the 50 crore citizens, a large percentage is also coming from those particular geographies. Now, for a healthcare provider, there used to be no incentive to actually set up hospitals because he did not have the paying citizens there. With Ayushman Bharat coming in with the government saying that I am ready to support their finances and I am going to look after the treatment, there is a big impetus for the healthcare providers to go to tier 2 and tier 3 cities and start setting up hospitals. The unit economics of setting up hospitals has now started becoming feasible. So I think, along with the COVID, I think the Ayushman Bharat PMJY has also made a very formidable case for strengthening and improving the healthcare infrastructure. Okay. Indeed, that is true. Schemes like Ayushman Bharat have definitely been really important. But since you spoke about this one particular flagship scheme, let me bring in Urvasi here as well. Urvasi, if we are trying to look at the way the entire healthcare system needs to work, then these schemes like Ayushman Bharat are really helpful in bringing that affordable care to the common man. But then they also need to be supported by adequate physical infrastructure, and not only at primary level, but at tertiary and then secondary level as well. Yes, absolutely. So I think, these are the building blocks of the health system, really. We start with public health and primary care. And I agree that has to be really the priority for the government. It has to be the first charge on government expenditure. Because, across the world, if you look at strong health systems, public health is really the main role of the government. So I think there is no disputing that. And of course, we have to raise funding in that area. But then, as you said, we also have the secondary and tertiary levels of care. Currently, we've had a lot of our big hospitals or facilities concentrated more in the larger urban centers, the metropolitans or the larger urban centers. But we are gradually seeing that there is both an increased demand as well as opportunity through public-private partnerships. And I think if one thing that the pandemic has presented as an opportunity, because we've spoken a lot of the challenges, but an opportunity has been the public-private partnerships. If you see telemedicine, for instance, I think it's been a huge success of the public-private partnerships and what we can achieve through that. So we need to use that same lever and expand health infrastructure, expand hospitals in the smaller cities and towns, and eventually in rural areas as well, because that's where our unmet need for healthcare is really the highest right now. Okay, definitely. That is where, setting up of aims, new aims, and, resolving that regional imbalance, Preeti, is what is really important. और कुछ आंकड़ों के जरिए हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं विशाल इस समय। स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च की हमने पहले बात की कि किस तरह से सरकार उस पर खर्च कर रही है सुविधाओं को लेकर। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो खर्च हैं वो जितना अहम है उतना ही अहम अनुसंधान यानी रिसर्च पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसको लेकर अगर देखें तो इस नज़रिए में खासा बदलाव भी आ रहा है। अनुसंधान को लेकर सरकार का जो नज़रिया है वो बदला है। अगर स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए बजट जो जारी राशि है उस पर एक नज़र डालें तो साल 2018 की अगर बात करें, साल 2017-18 का आंकड़ा देखेंगे, इसमें 1731 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 2020-21 में अगर देखें तो ये काफ़ी बढ़ा है और स्वास्थ्य अनुसंधान पर बजट को बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी सरकार ने 900 करोड़ रुपए की जो राशि है वो कोरोना महामारी की वैक्सीन के विकास के लिए भी जारी की। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान पर भी जो खर्च है वो बढ़ाया गया। 2018-19 में ये 10 करोड़ रुपए था जो बढ़कर करीब 39 करोड़ रुपए किया गया है। ये हम ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान की बात कर रहे हैं।
इसके बाद कोरोना महामारी के बाद जो अनुसंधान का काम हुआ वो काफी तेज हुआ। जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है उसमें साल 2018-19 में जहां ऐसे अनुसंधान पर मात्र 36 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वहां 2020-21 में 161 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया था। फंड बढ़ने से अनुसंधान में भी तेजी आई है। 2018-19 में जहां 10 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, वहीं 2020-21 में 144 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इंट्राम्यूरल रिसर्च यानी संस्थान के अंदर होने वाले अनुसंधान की अगर बात करें तो 2018-19 में 823 पेपर पब्लिश किए गए थे, जबकि 2020-21 में 2362 रिसर्च पेपर पब्लिश किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंट्राम्यूरल रिसर्च के तहत 2018-19 में केवल 8 पेटेंट फाइल की गई थी, जबकि 2020-21 में 49 पेटेंट फाइल की गई। इसी तरह 2018-19 में जहां कुल 13 तकनीकों का विकास किया गया था, वहीं 2020-21 में 75 तकनीकों का विकास किया जा चुका है। यानी अनुसंधान के क्षेत्र में भी लगातार जो बजट है, जो खर्च है, वो बढ़ रहा है और इस पर काम भी काफी तेज हो रहा है। डॉक्टर राय, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। अगर हम देखें, चाहे वो अनुसंधान की बात करें या हम ओवरऑल पूरे हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? पीपीपी मॉडल की जिस तरह से बात की अभी मैम ने, उस पर जो काम किया गया अब तक कितना फायदा हुआ, आगे उसमें कैसे हो सकता है, और मजबूत ओवरऑल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए किस तरह से ये पीपीपी मॉडल कारगर हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को कैसे देखा जाए इसमें? धन्यवाद। एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपकी बात को आऊंगा, उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जीडीपी पे जो हम 1.6 और 1.3 की बात कर रहे हैं, हमें इस महामारी ने ये सिखाया है कि 1.6 और 1.2 से हम फ्रैक्चर हम बैंडेड से ठीक नहीं कर सकते। फ्रैक्चर के लिए हमें प्लास्टर लगाना पड़ेगा। अब वो समय आ रहा है कि हमारे देश को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम 4 और 5% तक हम जीडीपी को हेल्थ पे खर्च करें। इससे कम में हम चलेगा। देखिए, पिछले 70 सालों से देश को एनेमिक हिसाब से हमारा व्यवहार हो रहा है स्वास्थ्य के एरिया में। स्वास्थ्य में हमने खर्च नहीं किया, इसीलिए हमें इस महामारी में बहुत मुश्किल से संभालना पड़ा, सब लोग को मिल के काम करना पड़ा। इस समय हर आदमी खड़ा था हमको सहायता करने के लिए। हम लोग इस महामारी से बाहर निकल रहे हैं, जो लगता है और विश्वास भी है। लेकिन जीडीपी 2% से नहीं होगा, हमें 4.5, 5, 6, 7, 8 तक शायद जाना पड़ जाए। अगले 8 से 10 सालों तक इसको पूरे स्वास्थ्य को सुधारने में, एक बात याद रखिए, जिसने पहले कभी सोचा था कि स्वास्थ्य कोई जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य पे खर्च नहीं करने से कुछ नहीं होगा, हम चलते रहेंगे, इस महामारी ने उन सबको गलत प्रूफ कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात, पीपीपी मॉडल जो है, इसमें हर प्राइवेट हॉस्पिटल पार्टिसिपेट करने को तैयार है। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पीपीपी इज द बिगेस्ट वे फॉरवर्ड। आज अगर आप देखें कि सबसे बड़ा स्वास्थ्य का चौधरी कौन है, तो वो भारत सरकार है और स्टेट सरकार है। ये इनके पास सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के संस्थान है और सबसे ज्यादा संस्थान जो बंद है वो भी इनके साथ है। अगर 70% इलाज लोगों का आउट ऑफ पॉकेट प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि सरकारी संस्थान उपलब्ध नहीं है। और पीपीपी एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको ओवरकम करने का, इसको ठीक करने का। हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। जिस तरह से हम लोगों ने इस पैंडेमिक में एक दूसरे का साथ दिया, हम आपके साथ पीपीपी में चलने को तैयार हैं। सरकार को एक हम पे विश्वास करना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा सही ढंग से कैसे इलाज करें। मेरा एक और पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा कि पीएमजे जो स्कीम है, जो अभी ओएसडी साहब ने कहा, बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा कि सही वैल्यूज कहाँ पे है, क्या सही रेट्स है। अगर वो सही रहेगा तो ये जो स्कीम है ये और आगे बढ़ेगी और अच्छी चलेगी। Okay, definitely there are tweaks always required in certain policies out there. Let me also bring in Miss Ananya Awasthi here. Miss Awasthi, as Dr. Roy is pointing out, and Mr. Jhaveri was also agreeing to this point earlier, and we will have to increase spending there. Now, there's a lot of money which needs to be spent, but the question is,
where to spend it in this particular sector and how to go about spending it so that it actually results in concrete, tangible, outcomes which can be seen and felt specifically from the common man's point of view? Absolutely. As you said, I think we are very clear that we need to place the buck on the table, as far as public health goes, as far as healthcare goes. The question is, where do you have the maximum returns on investment? So in fact, a review by the Harvard School of Public Health says that investment in non-communicable diseases, chronic diseases, those coming from diabetes and hypertension leading to cardiovascular diseases, strokes, cancer, mental health, investment in this area can actually save India of $4.5 trillion before 2030. Now this is a big, eye-opener. Usually we have this rhetoric in our mind that, India is, probably full of infectious diseases, chronic diseases are still a thing of the West. And, but when you look at the data, you realize that 60% of the disease burden, current disease burden, if not more, is made up by non-communicable diseases or chronic diseases like, diseases related to cardiovascular disorders, and lung diseases or strokes and cancer and all of those. So we need to first of all prioritize our investment on non-communicable diseases. The second question is, at what point do you invest in the non-communicable diseases, considering that they're so important? So I would really say that as a public health practitioner, it makes more ethical sense, it makes more medical sense, it makes the most economic sense to invest in prevention of non-communicable diseases. Mostly because these are lifestyle related issues, for example, high salt or sugar in your diet, sedentary lifestyle, smoking, tobacco use, alcohol use. These are all lifestyle related disorders which can be prevented. And for prevention, you need a lot of behavior change communication. Now that does not mean this does not require a lot of investment. It does require investment, but of a different kind. For example, Prime Minister Modi led the clarion call for, do gaz ki duri or mask wearing or hand washing. I think these would be fundamental in prevention of most of the infectious diseases that we'll, probably would evade going forward. So such behaviors need to be tapped in, and improved health-seeking behaviors can be critical in our fight against non-communicable diseases. So of course, investing in prevention, investing in behavior change communication, and possibly investing in mobile technology and tapping really that even in rural areas would go a long way as far as investment in public health is concerned. Okay, definitely prevention is the best way forward there, Preeti, as Awasthi is pointing out. और जैसे बड़ी बात जाहिर तौर पर एक बार फिर हमें याद आया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी असली जो वेल्थ है वो हेल्थ ही है। झावेरी जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, जैसे अभी हमें अनन्या ने भी समझाया कि किस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को लेकर अगर बात करें तो हम जानते हैं कि इसे लेकर भी भारत में स्थिति अब ख़राब होती जा रही है, चाहे वो कैंसर की हम बात करें या डायबिटीज़ की बात करें। इसे लेकर क्योर बीमारी का हो उस पर ध्यान देना तो ज़रूरी ही है, लेकिन प्रिवेंशन कैसे रहे, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उस पर क्या आपको लग रहा है जो सरकार का अप्रोच है वो सही है और आगे इसमें भी निवेश की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, the whole vision of going towards a holistic and integrated health system is very critical. फिलहाल काफ़ी जो health systems के हमारे components है वो fragmented है, वो siloed है. So we need to develop a system which first of all talks to each other. The primary should talk to secondary, which should talk to tertiary. The public hospitals need to talk to private hospitals, and that's why it is very important to design a system which is more holistic, which is more integrated. Within Ayushman Bharat, we are focusing on a concept and a mechanism called continuum of care, wherein if a beneficiary or if a citizen is going to a health and wellness centers jahan pe there is some particular requirement for him to take a treatment at an advanced level, then he should be going and getting the forward referral to the nearby PMJY hospital. Similarly, once he is done with his treatment, he can go back to the health and wellness center for the follow-up care. Okay. Now, this is one of the example. But I think one thing that I would like to keenly highlight here
is the launch of the National Digital Health Mission by the Honorable Prime Minister on 15th of August last year. ये जो NDHM है, that is going to serve as the fundamental digital backbone for healthcare of this country, wherein a particular citizen can voluntarily apply for a health e-card. Once he gets his health ID, then he can have the option of storing his electronic medical record. He can see who are the nearest verified doctors, which are the nearest hospitals to him. So in and all, what is happening is that पहले ये था कि आपको जब भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मिलते हैं आप अलग फाइल में डालते हैं, फिर आपको डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन, तो ये जो फाइल वाला जो पूरा सिस्टम है, एंड देन द डॉक्टर डजंट नो योर मेडिकल हिस्ट्री, यू डू नॉट नो हु इज द वेरीफाइड डॉक्टर, ये जो जितने भी ये प्रॉब्लम्स है, that is something the National Digital Health Mission is going to address. Okay. Right now the NDHM is in a pilot mode, and I think in months to come it will start getting expanded to the other parts of the country. Okay. That is a really important point out there, which Varun is mentioning. That is NDHM, the Digital Health Mission, and the use of technology there as well. That brings me back to Urvasi here. Urvasi, we have had this discussion quite a number of times during the COVID-19 pandemic as to how technology can be used to, further improve the quality of health services. And also, it can bring in a lot of, changes as well and address various challenges also. So, how should we move ahead here on the amalgamation of technology and health? Yes, absolutely. As I was mentioning that, for instance, the telemedicine during the pandemic, we saw that physical consultations were not really possible or visible because we had the physical distancing norms in place. So we saw a huge uptake, not just in metros, but also in, some cities, several cities beyond that, of telemedicine services. A lot of the doctors and specialists, of course, also adopted these, but people also increasingly, we saw, became comfortable with the idea of remote consultations. So I think that is just the tip of the iceberg. In terms of the potential of technology. Okay. And how we can substitute. It doesn't take away from everything else that we need to do in terms of the physical infrastructure, the human resources. That is really very important because we cannot forget the human resource element. It's not just about doctors and specialists, but other cadres of health workers as well. So of course we need to do all of that, but technology can really play a very important complementary role, especially when we think of India as having many rural and remote areas where access to healthcare, to doctors, to specialists is very difficult. Because, India is not just your Mumbai, Chennai or Bangalore. India is much more beyond that, as we know. So how do we reach all these areas and how do we make sure that they are not deprived of services? So whether it's artificial intelligence, whether it is teleconsultations, telemedicine, all of this, I think in the future will have a big role to play. And this is also where the public-private partnerships come in, because the private sector can really bring in the technological know-how, the expertise, the innovations, and the government can then scale it up as part of the overall system. Okay. Dr. Rai, your views on the technology part there, and as Urvasi is saying that private sector obviously can play a very important role, but also a related aspect, which again was mentioned by Urvasi, that it's not only just about technology, but we will also have to build on the skills of our human resource as well. Vishal, there's no doubt about that. The technology is life. WhatsApp is not working, switch over to Signal. There is availability, there is a way. Technology is no more whether you should have or not have it. You have to have it. And it's advancing every day. We all are moving in the direction every day. Everything has become better. The digital has brought a lot of comfort because, especially in pandemic where we saw that where people couldn't come to the hospital. So we could treat them from a distance. We could advise them. We could follow them. We had the very fact that people can access their report sitting at home. So there is no doubt about that. That's a way forward, and we all are participating in it non-stop. As soon as something comes, we all keep on adopting it. There is no reason why we will not do that because it brings the pricing down, it brings the comfort, and also it saves a lot of unnecessary problem which people face. Private sector is contributing, has been contributing.
But only deterrent which we see in time to come for the growth of digital is the costing. How much is going to cost us? Is it really same story? Like that, if we have not invested in GDP enough, we had a problem. Are we going to invest enough in the digital investment? If we don't invest enough, we will have a problem. For example, you go to any USA hospital. Okay. Everything you pick up a consumable, the moment you take it off the shelf, it gets billed or it gets recognized somewhere. Here, our people are still entering it into the system. So they have what they have achieved 10 years back. We are trying to work out now, and still many of our hospitals, at least 95% of our hospitals, have not reached there even. Okay. So digital at what cost is going to decide a lot of acceptance of a digital conversion. Okay, definitely. That is really, really important out there, Preeti. Digital and technology and the amalgamation of both tech and health services. बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी से आगे जैसे ह्यूमन रिसोर्स का मुद्दा भी आप उठा रहे थे अभी विशाल, इसी पर मैं अनन्या अवस्थी से जानना चाहूँगी। जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ख़ास तौर से एक बात आती है कि भारत की आबादी हम जानते हैं बहुत बड़ी है, और उस हिसाब से अगर हम मानक तय करें डॉक्टरों की तो उसकी कमी को लेकर भी बात आती है। हालांकि हम अगर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक और एलोपैथी डॉक्टर मिला लें तो जाहिर तौर पर हम वो मानक पूरा करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एलोपैथी डॉक्टरों की बात करें तो कुछ कमी है। इसे लेकर हमने हाल ही में देखा सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई। अभी हमने देखा आयोग ने जो मेडिकल कॉलेज खोलने के जो नियम थे उसमें भी काफ़ी ढील दी। डॉक्टरों की कमी से लेकर और ख़ासकर स्पेशलिस्ट अगर हम सर्जन्स और डॉक्टर्स की बात करें उसे लेकर क्या दिशा दिख रही है और बजट में इसको लेकर क्या तस्वीर होनी चाहिए? जी, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँगी। पहला, जैसे आपने कहा कि पिछले इनफैक्ट आप 2-3 साल के फिगर्स देखें तो करीबन 47 से 48% नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो एनुअल आप देखें वो बढ़े हैं। जितनी मेडिकल में सीट्स थी वो भी बढ़ी हैं। तो इस डायरेक्शन में डेफिनेटली सरकार ने काम किया है और जो एक डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो है वो बढ़ा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं कहूँगी डिबेट को एक ये वाला टैंजेंट देना चाहूँगी कि येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द नीड फॉर स्पेशलिस्ट्स, ऑन द नीड फॉर डॉक्टर्स, स्पेशली in areas like say mental health care. We do not have enough psychiatrists, we do not have enough psychologists. So yes, in these areas specialists are required to be hired, to be working in public facilities, to be working in tier 2 tier 3 cities. But उसी के साथ साथ हम लोग को ये भी सोचना चाहिए there is a lot of untapped human resource in the form of आयुष health workforce. एंड ये 9-10 लाख आयुष हेल्थ वर्कफोर्स है इंडिया में। हम उसको माने या ना माने, कम्युनिटीज़ का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काफ़ी बार आयुष डॉक्टर्स ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल या फीजिबल सोल्यूशन हम लोग के लिए हो सकता है वो ये है कि लॉट ऑफ दीज आयुष प्रैक्टिशनर्स आर क्वालिफाइड, बट अगर सपोज अभी वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, सपोज कल को हम ट्यूबरकुलोसिस को मिशन मोड में उठा करके 2 साल में ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम ज़रूर ऐसे आयुष प्रैक्टिशनर्स को टारगेट करें, उनको ट्रेन करें, उनको मेन स्ट्रीम करें, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट एक बहुत बड़ी बात है, कम्युनिटी ट्रस्ट एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में हमें जो इतने आयुष प्रैक्टिशनर्स, इनफैक्ट मुझे लगता है जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, सपोज हम पोषण अभियान की बात करें तो पोषण का मतलब सिर्फ एक हाई ग्लूकोज बिस्किट खा करके उसका मतलब पोषण नहीं है, या कोई भी हाई ग्लूकोज पाउडर खाने का मतलब पोषण नहीं है। पोषण में आप हरी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं या अच्छा अनाज खाएं। तो मुझे लगता है प्रिवेंशन की जहाँ तक बात होती है वहाँ पर ज़रूर आयुष टाइप के प्रैक्टिशनर्स को हम लोग मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, इनको ट्रेन कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम एक फोकस्ड डेडिकेटेड कोई मिशन मोड में अगर हम लोग एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को हर साल में लें, तो जहाँ तक स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स की बात है वो एक लेवल तक ही हर साल पे बढ़ पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा करीबन 50% इंक्रीज हुए ही हैं मेडिकल कॉलेजेस, MBBS डॉक्टर्स, कितने सारे एम्स बनाए गए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम आयुष वर्कफोर्स के ऊपर देखें और इसी के साथ साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे आशाज हैं, ANMs हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अगर हम इनकी सैलरीज की बात करें, इनके रेगुलराइज होने की बात करें, इनके स्टाइपेंड की बात करें, इनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो जितना फोकस हम स्पेशलिस्ट और हाई एंड टर्शरी डॉक्टर्स पर डालते हैं उतना ही फोकस हम ऐसे अलाइड हेल्थ वर्कफोर्स
डॉक्टर्स के ऊपर भी डालें, इंक्लूडिंग नर्सेज पर भी डालें, जो एक्चुअली हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। Okay. Indeed, that is really important out there. Varun, your views there on this same aspect, and let's also factor in what has been done right now, and so that the way it can be scaled up, perhaps through some more allocation in the budget, or maybe we can bring about some more policy tweaks to try and achieve these targets. Yeah, thank you, Vishal, for that. So I think if we look at the last 3 to 4 years, major reforms has been made for augmenting the human resources. Ananya mentioned about the 50% increase in the medical seats and the medical colleges. But along with that, there are also a lot of policy reforms which have taken place. One of them is setting up the new National Medical Commission, jiska bill pass hua tha in the parliament. The other one is that there is also a board of allied healthcare professionals which has been set up to guide the quality of the medical education which would be taught in the medical colleges. The third one is that there are also reforms with regard to the type of land requirements which used to have for setting up of medical colleges. The fourth part is that if you trace the development, Niti Aayog has also come up with a very interesting innovative mechanism that the private sector medical college can actually link with the district hospital. So this is a great way to actually start augmenting the type of human resources which are available. The fifth is that if you look at the whole public-private partnership announcements which have happened in last year, you will see that now the government has come up with the new viability gap funding. So this viability gap funding is ready to support the scaling of healthcare infrastructure through which more doctors can be trained, more doctors can be available. Okay. The sixth part is that the Health Sector Skill Council, they are also taking a lot of efforts in seeing that what is the latest and the recent curriculum which our doctors should be aware about. So in and all, a lot of work has been done, but I think a lot of I would say a lot of continuation and a lot of new reforms are still required in this space. Okay, definitely reforms are required, and certain policy tweaks also required at certain places to achieve all those tangible targets there. वैसे पर डॉक्टर रॉय, आपका क्या मानना है, और आपको लगता है क्या कि जो अब बड़े प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सेमी अर्बन एरिया की तरफ भी रुख करना चाहिए, टियर 2 टियर 3 जो एरिया हैं उनकी तरफ रुख करना चाहिए, और इससे काफ़ी बदलाव आ सकता है? एक तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की पिछले में रही और अभी रही, वो हेल्थ एजुकेशन के रिफॉर्म्स में जो इन्होंने, जैसा भी झावरी साहब ने कहा, दैट इज absolutely fabulous and fantastic. This country was reeling under a very, very old system of education, which is being reformed, process is on, and the way Niti Aayog and the NMC is working on is very, very commendable. That's something which is absolutely very, very dear to our heart, and we are very happy that we will have probably more progress in healthcare education, which is the need of the time. We all are here. We all are here to support, and we want to make sure that government, whatever they are doing, we will support them. In education, the biggest role which can be played not just by the medical colleges. There are thousands of hospitals which are 100-bed, 200-bed hospitals, which can indulge into educating the specialist. And that is something which I hope, and I was told in the past that is being done. If all these hospitals get together, the private and government, then probably our ability to produce more specialists will be very high, especially in view of whatever government produces. जो भी postgraduate लड़के बच्चे निकलते हैं सरकारी अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से, वो 80% प्राइवेट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. Okay. हार्डली 20 से 25% सरकार में जाते हैं. तो प्राइवेट अस्पतालों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट बनाए, अगर सरकार अपना रवैया उनकी तरफ जो है फेवरेबली करे, जो सरकार कर रही है, ये मेरी समझ है. दूसरी बात, जैसा आपने भी कहा मैडम, हम लोग तैयार हैं टायर 2 सिटी जाने के लिए, टायर 3 सिटी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं. कारण ये है कि अभी हमारे पास क्या वजह है, बड़े अस्पताल इन छोटे शहरों में क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि वहां पे हमें ट्रेन्ड मैन पावर नहीं मिलती है. अगर हम एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट को वहां ले जाना चाहें तो
तो जाने को तैयार नहीं होता है। अगर जाने को तैयार होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है। एज ए रिजल्ट द हेल्थ केयर इज लिमिटेड एंड restricted and focused and concentrated on larger towns. Okay. But we guess that with PMJ and if they get their costing right, the Jhaveri, I hope you are listening to me. If you get your costing right, then it will lead to progress. As you are supporting infrastructure, you are paying for infrastructure also. And if you get a costing right, we will go to the tier 2 cities and tier 3 cities. Okay, definitely. Those are good suggestions out there, and I'm pretty sure not only Mr. Jhaveri, but others involved in the policy making would also be listening to you, Dr. Roy, one of them being Urvasi. Let me bring in Urvasi back here. Now that we are, nearing the end of this discussion, Urvasi, let's look at the tangibles in terms of what can we expect and what can be done as far as budget is concerned for the healthcare sector. Yeah, I think, from the budget point of view, the most obvious is an increase in the allocation for the health sector. It's something that is, of course, committed in our national health policy, but we might need to accelerate the rate at which we reach that goal of 2.5% of GDP, because as I said, now we have new and additional challenges as well. We have our existing challenges of non-communicable diseases, our maternal child health issues are still not fully resolved. And now we also have this pandemic. And I would like to say that this is probably not going to be the last pandemic that we'll see. So it's very important to invest in a strong and resilient public health system, because we are living in a very interconnected, globalized world. And we can only expect more such pandemics or disease outbreaks in the future. So we have to increase the allocation for this sector. Health is not just a social sector, it's as much an economic sector. And I think this pandemic has proven that beyond doubt. So I think that is from the budget point of view what we need to do. But overall, and I think that's something that's been discussed as well, that the orientation of the health system must shift from just being dependent on, hospitals or being cure focused, to also move to the public health side, the preventive side, primary health care, because it's not only more expensive, but it's also undesirable to keep letting people reach more advanced stages of disease. You want to prevent as much disease, and for the others, you want to detect disease and treat as early as possible. So whether it's using Ayush, whether it's using our health and wellness centers, whether it is bringing in additional cadres like nurse practitioners, we need all these measures to reorient the health system. You need doctors, you need specialists, you need hospitals. Nobody can deny that. But the orientation must shift towards prevention and public health. Okay, definitely. Prevention is the key word out there, and that is where the public health also is really significant and बिल्कुल. important. अनन्या अवस्थी ने भी प्रिवेंशन को लेकर काफ़ी बातें की थी. अनन्या, आखिर में मैं आपसे भी अगर समझना चाहूँ, आपके क्या कमेंट्स रहेंगे इस बजट में उम्मीदों को लेकर, क्योंकि जैसे हम शुरू से भी कह रहे थे कि जिस तरह से चुनौतियों और चैलेंजेस का साल रहा 2020, उसी तरह हेल्थ सॉल्यूशंस का साल रहने वाला है 2021. तो माना जाए कि बजट में अगर थोड़ा बहुत भी जो पुश मिलेगा वो काफ़ी मायनों में बड़ा साबित होगा इस सेक्टर के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में हमने अपनी क्षमता को पहचाना है. पीपीई किट जो हर ज़िले में बनकर तैयार हुई, तुरंत हैंड सैनिटाइजर्स तैयार हो गए. एक तरह से हमने जो क्षमता को पहचाना है, तो बजट का थोड़ा सा पुश अगर हम सेक्टर्स वाइज देखें, वो कितनी बड़ी दिशा आगे इस सेक्टर को, पूरे हेल्थ सेक्टर को दे सकता है? जी, इनफैक्ट सन 2020 ने तो हमें ये सिखाया कि पब्लिक हेल्थ का कितना बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ सकता है. पब्लिक हेल्थ सिर्फ एक हॉस्पिटल में रह जाने वाली बात नहीं है. हमने देखा है कि पब्लिक हेल्थ अगर पब्लिक हेल्थ इकोनॉमी को इतना इफेक्ट कर सकता है, तो जो आपका प्रश्न है, इकोनॉमी या बजट भी पब्लिक हेल्थ के इन्वेस्टमेंट को उतना इफेक्ट कर सकता है. तो मुझे लगता है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में गवर्नमेंट ने एक सही दिशा दी है टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर टू एटलीस्ट 2.5%. आई फील कि उस डायरेक्शन में सबसे पहले तो बढ़ोतरी हो. दूसरा, काफ़ी बार हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ सरकार भी नहीं कर सकती है. मुझे लगता है बजट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इट सेट्स द सेंटिमेंट इन द मार्केट्स, इट सेट्स द सेंटिमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर. तो मुझे लगता है कि अगर पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी मिलेगी बजट में, तो प्राइवेट सेक्टर भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट्स जो है हेल्थ केयर में लाएगा. कितने सारे हेल्थ केयर स्टार्टअप
स्टार्टअप्स हैं, अगर वो MSME की कैटेगरी में आ जाएं, कितने सारे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है इन सबको बढ़ावा ज़रूर मिल सकता है। एंड आई विल अगेन रीइटरेट कि सन 2020 इन्फेक्शियस डिजीज़ का साल रहा, और जैसा कि अभी एक मैम ने कहा कि दिस इज़ नॉट द ओनली इन्फेक्शियस डिजीज़ आउटब्रेक, देयर मे बी मोर कमिंग आवर वे, बट आई फील कि कोविड-19 को एक ट्रेसर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी तरीके से जैसे हमने कोविड-19 में हाथ जोड़ करके पूरा एक जन आंदोलन की तरह जो है कोविड-19 से लड़े हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है अगर हर साल एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को प्रायोरिटी बना करके, वो सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, CSR सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, कम्युनिटीज़ हो, ये सब अगर मिल करके लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम जल्द ही पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से पब्लिक हेल्थ सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगेंगे। और इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगी, क्योंकि मैं खुद रिसर्च और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर इस सेक्टर से आती हूँ। मुझे लगता है कि सन 2021 अगर सोल्यूशन का साल होने वाला है तो हम लोग ज़रूर ऐसी रिसर्च करें जो कि स्केल अप हो पाए। आपने एक छोटे से सैम्पल साइज में बैठ करके एक छोटे से शहर में अगर प्रूव कर दिया कि A लीड्स टू B एंड B लीड्स टू C, आई डोंट थिंक दैट विल बी इनफ। वी विल नीड स्केलेबल सॉल्यूशंस, वी विल नीड ऑपरेशनल रिसर्च, वी विल नीड इम्प्लीमेंटेशन साइंसेज, बिकॉज at the point of implementation contextual factors become very very important। तो मुझे लगता है रिसर्च को भी जो है इस डायरेक्शन में 2021 में large scale solutions की तरफ जाना होगा। Okay, definitely. The research is really important, significant out there aspect when we talk about public health and health services. Let's have a quick concluding comment from Varun as well. Varun, you're part of the government structure there. So from your perspective, if you want to understand and want to, perhaps hazard a guess here as well in terms of what exactly might be the focus areas when we talk about the health sector for the budget. Well, I think, as mentioned earlier, the focus needs to be on galvanizing a very strong integrated health system. I think the country has a very definite and a very strong and a robust national health policy which guides us. So I think the focus needs to be on taking forward the fundamental reforms which have been taking place, whether it is with regard to expanding the universal health access, whether it is with regard to medical education, whether it's with regard to planning better prevention campaigns, the national health missions. I think the focus is going to be how to bring all of them together, how to further engage the private sector, how to create and catalyze better models of innovative financing so that the money that you are investing, you get a better quality of care for the same money. That's the reason why I keep on saying that it is not only about the quantum of money, but it's also about how you are using that particular money. So I think this is going to be the smart allocation which needs to be done. And at the same time, how to embrace yourself with the technology. So I think, this budget is going to be an opportunity for bringing all of them together and creating and moving towards the vision of the national health policy. Okay, definitely. That is a really, a wonderful way to put it across. Money is needed for the health sector, but also value for that money is really equally important there. और इसी के साथ जो आज के कार्यक्रम का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। जाहिर है एक बार हम समाप्त करें तो देखें कि बीते साल ने स्वास्थ्य सुविधाओं की अहमियत को हमें और ज़्यादा समझाया है, और अब उम्मीद यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय और कई उपक्रम इस बार बजट में किए जाएंगे, और ये जो पूरा बदलाव होगा उससे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं और ज़्यादा मजबूत होंगी। इसी के साथ इस चर्चा में बजट ऑफ होप में इतना ही। आपको बता दें हम कि इससे पहले मैं गेस्ट को धन्यवाद भी देना चाहूँगी। उर्वशी प्रसाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आलोक रॉय, अनन्या अवस्थी, वरुण झावेरी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। विशाल, कल हम बजट ऑफ होप में बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। Definitely, that is really important aspect out there when we are looking at all-round development. So stay tuned and do not forget to catch this special show on transport infrastructure, the other sector which we're going to talk about. If by any chance you might have missed this particular show, then you can also watch it on our YouTube channel. Stay tuned.